Good morning, everyone. In last lecture, we studied the main topic of your behavior, uh, FHS. Okay, in financial human behavior. Okay, financially we are study the human behavior. From today, the second model, the after the individual behavior, what is for you in group activity? The first we are to know the number of types of the types of group. The first is friends group. Second is your parents with your family group. Hmm? Enemy group, the leadership group, work group, overheads group, other number of group. Overheads group is the expendive group in my language. Which one? Where your expenditure are done. असा ग्रुप जो तुम्हाला खर्चात किंवा खर्च कसं करायचं हा शिकवण्यासाठी बनवलेला असतो. इट्स कॉल युअर TTM, तुझं तू माझं मी किंवा एकलंच कॉन्ट्री काढायचं अँड ऑल जी काय पद्धती. इट इज युअर बिहेवियर, युअर ग्रुपली ऍक्टिव्हिटी, and this activity are conducted by you for your behavior development in time of group. In time of group, the somebodies are not well and somebodies are not refreshed from your group activity. ते कधी कधी फ्रेश नाही होणार तुमच्यावरून, खुश नाही होणार तुमच्यावरून, आणि जे खुश नाही होणार त्यांनाच तुमचं ग्रुप एनिमी म्हणतात. And this group enemy is converted to the disclosure and break your group. तो तुमचा ग्रुप तोड़ण्याचा प्रयत्न करता है, वो तुम्हारा ग्रुप तोड़ने की खासियत रखता है. Maximum the leader and the head of the department are not fixed, that my the undercover are make an individual group for the best behavior, because it is the problem for his and his chair, and that's why he never study and never want to my co-partners, your co-workers, your my co-group partners become to a friend circle, become to a the one unity, and this unity are it is effective. कधीच तो तुम्हाला युनिटीमध्ये येऊन देणार नाही. तर काय नाही का तुमच्यामध्ये भांडणं लावण्याचा प्रयत्न करा, आणि ती भांडणं त्याला गरजेची असतात. आणि कशी असतात हे आपण ह्या चॅप्टरमध्ये शिकणार आहोत. आणि इट इज FHS मॉड्यूल 2 ग्रुप ऍक्टिव्हिटी. ओके, लेट्स स्टार्ट. The first is explanation from the study. Introductory part. What is group? Work group. We are the member of group. Whether we study at home, at any home, study in school, college, or work of business establishment. Hmm? Group has become the inevitable the part of living. Lives of group are the beneficial as well as non-beneficial to the people. Such saying two is company, three is code, or two heads are better than three. Are the head then expensive whenever? Yet foreign the groups are cannot be avoided. Everyone the organization want to be the successful always the function in group. Also, people who are skilled at functioning which group can be only become can be only become successful in modern organization. In border, since the group in collection of individual who have manually depending on relationship of formal differentiates of group, in that it is refer a collection of two or more people with stable pattern relationship between them who are share common goal or presence utens and W and group. In short, मी आता ते सांगितलं ते. The explanation is depending on the group is an activity generating work. सर्वांचं एकच ऍक्टिव्हिटी जनरेटिंग वर्क असतं, आणि दिस ऍक्टिव्हिटी जनरेटिंग वर्क इज दिस गोल. आणि तो काय असतो त्यांचं धैर्य असतं, गोल असतो. And this goal are fixed at the moment, and for this goal all group members are doing similar at similar work, doing similar for the similar work, and that's called X group activity. The main point
and the compressive, the definition would be said that the group existing organizer its member. The first is motivating to join. आपण ग्रुपमध्ये कसं करू शकतोय तर how what can be the activity done by the group. The first is the member are joined there. Then second is contribution of variations amount of the group process. Then reach agreement have decided to the various formats integration. आणि त्याच्यामध्ये आपण various form group is an activity for done anything but act for the moment and some enjoyment and all. त्याच्यामध्ये तुम्हाला एन्जॉयमेंट पण पाहिजे सर्व पाहिजे मग त्यासाठी आपण डिफरंट आर थिंग आर दॅट फर्स्ट वी आर स्टडी द टाइप्स ऑफ ग्रुप नंबर ऑफ तुम्हाला जसं मी तुम्हाला सांगितलं फ्रेंड्स ग्रुप फॅमिली ग्रुप असं नंबर ऑफ ग्रुप आहेत मग त्यांना कसं त्याने ॲज अ ह्युमन बिहेवियर डिवाइड केलं नाही द स्टडी द फर्स्ट इज group can be divided into the basic two types. The first is the formal group and second is informal. Then to me the formal group is a commercial group, your college group, your office group, official member group, your working group and all. And informal group, it means your family, family person and all, your family group, friends group are the informal group. Then under the formal groups, common group command group and task group. Command groups under your head of the department, your principals, some principals are there and these principals, some rules and regulation are conducting there. It is command group. And task group, the ready for task. Under this task the one person is lead to your task and remaining are follow this and answer the following this person, this one task group. This formality are done there. Under the informal, no formality are done there. Inter here here just interest groups, friends groups and etc are done there. Okay, just for example, the explanation is an formal group. A formal group is a work group which is defined by organizational structure in form of groups, the behavior that one should be engaged in the stipulated by the different direct towards the organizational goal. Okay, the formal group once again that can be classified. अभी तूने बोला नहीं क्या बोला नहीं तो फॉर्मल ग्रुप जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया क्या एक्सप्लेन किया वो एक कमांड या टास्क के अंडर डिपेंड होता है और टास्क और कमांड एक लीड के अंडर होती है और वो लीड्स को कौन फॉलो करता है तो फॉलो बाय एनी लीडर रिमेनिंग जो को ग्रुपर होते हैं उसको लेकिन वहां जो होने वाला होता है इज अ साइकोलॉजिकल बिहेवियर एंड दिस साइकोलॉजिकल बिहेवियर इज दैट formal groups once again can be classified as command group. A command group is specified by the organization chat, specified by the and organizational chat and often the consists of superior and the subrogation of report through that the superior. As the mention of earlier a common group determined by the command group determined by the organization chart. It can be composed of the individual who report directly due to the manager. एक से भी एग्जांपल दिया है कि हम जो करने वाले उस रिपोर्ट को हम किसका कमांड करते हैं मैनेजर को हम डिफाइन करते हैं कि हमने क्या किया एंड देन मैनेजर इज डिफाइन इट फॉर द एनी पर्पस किसको मैनेजर डिफाइन करेगा मैनेजिंग डायरेक्टर to CEO and CEO to the secretaries and etc. अब ये कैसे हुआ इट इज डिफाइंड कि ग्रुप बनाया हुआ था कैसे ग्रुप बनाया हुआ था तो यहाँ ग्रुप और मैनेजर्स आर डिसाइडेड टॉप लेवल टू लोअर लेवल अब दिस ग्रुप्स को उसने वैसे डिफाइन किया जैसे कि सबसे टॉप लेवल पर मैनेज एमडीज मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड सीईओ उसके नीचे मैनेजर्स होते और मैनेजर्स के नीचे डिपार्टमेंटल मैनेजर होते एक मैनेजर के नीचे 5 डिपार्टमेंटल मैनेजर के नीचे 10 फोरमैन्स के नीचे 15 वर्कर्स ये ग्रुप बनाया हुआ है एंड दिस ग्रुप्स आर डन दैट एंड दिस ग्रुप्स आर जैसे कि अपने कॉलेज की स्टडी करेंगे तो सिंपल है प्रिंसिपल के नीचे number of department and department head. Under this department head, number of minimum 1 or 2 mentors. Under this mentors, the 3 or 4 staff is there. This is group and group activities there. The formal groups. Okay, the formality is done for the one work. सबका एक ही काम होता है to teach them, to teach you.
तुम्हें सिखाने के लिए बनाया हुआ है, बिकॉज द वेल टीचिंग एक्टिविटीज डन देयर एट द यूनिवर्सिटी लेवल. For that, these formal groups can be command under this following system. And this following system is occupied by this level of study. अब वो किसकी लेवल ऑफ स्टडी है, कैसी है, उसके हिसाब से उनको फॉलो किया जाता है. ओके, देन टास्क ग्रुप. Also organize determine the task group represent this the work together the complete job task and project work, but not necessarily reporting to the same supervisor. For example, when the problem involved many department arise, people from those department may the appointed secretaries problem. अब देखो, ये टास्क ग्रुप इज अ फॉर्मल एक्टिविटी फॉर द कंडक्टिंग ऑफ एनी पर्पस. कोई ऐसा काम हो जाए जो रॉन्ग हो गया है, जो वो फॉर्मल ग्रुप को हैंडल करना है. लाइक अगर तुम्हारे ग्रुप एक डिपार्टमेंट ग्रुप है, उसके अंदर किसी स्टाफ को रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो जाए, तो उसके लिए एक टास्क फोर्स तैयार किया जाता है, एक कमेटी बनाई जाती है. दिस कमेटी हैंडलिंग बाय वन पर्सन एंड दिस कमेटी हैंडल बाय दिस. एज कंपेयर टू एज योर लेवल स्टडी, एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया तुम्हें, एक ग्रुप प्रोजेक्ट. तो ग्रुप प्रोजेक्ट का कंक्लूड निकालना, द फाइंड ऑफ दिस कंक्लूजन इज योर टास्क. और फॉर दिस टास्क कौन क्या क्या करेगा, द मेकिंग द प्लानिंग, एंड दिस प्लानिंग इज डिपेंडिंग ऑन योर ग्रुप members. Okay, then informational group, sorry, informal group. अब informal is not a formal, जैसे ही बनाया जाता है. Informal group are allegiance that the neither formal structure or not organized. Determine this group are natural formality work for environment that appearing in the response of need social contacts. Hmm? A few employees from different department who are regularly to launch together example of group informal. Few employee, कोई भी चार लोग या फिर कोई भी कहीं से भी आए हुए, उनको पता नहीं रहता कि टास्क क्या हो सकता है, या टास्क के लिए वो नॉट डिटरमाइंड पर्सन होते हैं. जैसे यू आर BMS फॉर मैनेजमेंट, BCom फॉर अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस, फॉर फ्रॉम आर्ट्स फॉर लिटरेसी. ये डिफाइंडेबल पर्सन ग्रुप बन रहा है कि आर्ट्स से आए तो उनको लिटरेसी के लिए डालो, साइंस से आए तो उनको रिसर्च एक्टिविटी में डालो, मैनेजमेंट BMS से आया, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी से आए, द स्टडीज कम फॉर द मैनेजमेंट, देन द पर्सन इज बेस्ट फॉर द मैनेजमेंट ग्रुप. हियर द एक्टिविटी आर डन. ये फॉर्मल में होता है. इनफॉर्मल में कोई भी कहीं से भी, और फ्रेंड कोई भी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि BMS की स्टूडेंट का BMS का ही फ्रेंड होना चाहिए, उससे कुछ नहीं है, सिर्फ नोट्स मिलेंगे, बाकी कुछ नहीं होने वाला. फ्रेंड्स की एक्टिविटी नहीं जनरेट होंगी. फ्रेंड्स ग्रुप ऐसा नहीं होता है कि तुम टास्क हो, ये थिंक रखने वाले भी रॉन्ग होते हैं कि फ्रेंड्स ग्रुप की लिमिट तुम्हारे लेवल तक होनी चाहिए. नो आइडिया, तुम किसी से भी फ्रेंडशिप कर सकते हो, यू आर कैपेबल फॉर दैट. बट तुम्हें उसको समझना है, तुम्हें उसको समझना है, वो तुम्हें समझता है कि नहीं, ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है. इट्स अ स्टडी ऑफ साइकोलॉजी एंड दिस इज मेकिंग द इनफॉर्मल ग्रुप. ओके, ऐसा नहीं होता है. then the internal यहाँ तो फिर अब इसमें two parts है. first is interest group. अब interest the particular part of interest. अब इसके अंदर उसने वही explain किया है, तो how much selection of friends group. The interest group usually the continue over time must last longer than general information group. Member of interest group may or may not be part of the same organization, department, but they are bonds together by some of common interest. वो एक ही जगह से होंगे ऐसा नहीं है, एक कॉमन बॉन्डिंग होती है. जैसे कि कुछ एक सिंपल एग्जांपल, स्टाफ टीचिंग स्टाफ बॉन्डिंग या स्टूडेंट स्टाफ बॉन्डिंग. तो इस बॉन्डिंग की वजह से वो स्टूडेंट टुवर्ड्स टू दिस स्टाफ, एंड अगर उसे किसी से स्टाफ के किसी भी मेंबर से बात करनी होगी, सबसे पहले जिससे बॉन्डिंग है उसके पास जाता है, क्लेरिफाई करता है कि जिस XYZ बंदे से उसे मिलना है, इट इज ओके टू टॉक एंड ऑल नॉट. ओके, फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ एग्जाम्पल्स बताया हुआ है. एम्प्लॉय हु गेट टुगेदर टू हैव देयर द वोकेशन शेड्यूल अटेंड. अब कोई एम्प्लॉय किसी भी डिपार्टमेंट का ओकेशन के टाइम पे या किसी फेस्टिवल के टाइम पे एक आता है, द मेकिंग फेस्टिवल ओकेशन या फॉर्मुलेशन ऑफ दिस ग्रुप फॉर द मेंबर इन द वर्क. देन अपने कॉलेज में कुछ एक्टिविटीज होते हैं, तो उस एक्टिविटी में स्टूडेंट एंड स्टाफ को अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्रुप बनाया जाता है.
टेक्नो इवेंट्स कॉल इट्स कॉल्ड टेक्नो इवेंट। उसमें सब स्टूडेंट्स और इसको टास्क दिया जाता है। इस टास्क के अंदर हम लोग एक एक्टिविटी करके दिखाते हैं। लास्ट ईयर भी हुआ था, इज द बेस्ट एक्टिविटीज इन कॉलेज, मे बी इन साल भी होगा। देन friendship group are often development because the individual member have one or more common characteristic। ये किससे बनता है? एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक से। अब ये बॉन्डिंग में मे बी अ कैलकुलेशन ऑफ सॉरी कैलकुलेशन ऑफ योर नॉलेज। कोई नॉलेज की बॉन्डिंग हो सकती है, जैसे कोई सीए कर रहा है तो उसकी बॉन्डिंग, कोई सीएस कर रहा है तो उसकी बॉन्डिंग। अभी जैसे तुम्हारे इसमें कॉमन आइडिया, ये तुम बीएमएस कर रहे हो, अदर स्टूडेंट्स विद यू आर इन 50 और 60 स्टूडेंट इन योर क्लास, but they are doing starter accounting study, then there also are the group members. You are a friend circle because their study pattern are same, knowledge are same, the behavior of thinking are same. तुम्ही त्याच्या बाहेर बघणार नाही आहे. ओके, देन द रिझन्स पीपल जॉइनिंग द ग्रुप. क्या रिझन्स होते हैं कि पीपल जॉइनिंग द ग्रुप? There are the various reasons. The first is proximity, interaction, and influence. One of the most common reason why the people join group is because of the work near each other. क्या बोला हुआ है कि काम जो होते हैं वो सबके करीबी होते हैं, ग्रुप में सिमिलर एक्टिविटी की वजह से। ग्रुप बनने की रीजन क्या बताया हुआ है? द फ्रेंडशिप ग्रुप आर, देखो यहाँ बोला हुआ है मोर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, सब में कॉमन यानी सेम कैरेक्टरिस्टिक। अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक होंगे तो काम भी उनका कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से सिमिलर होगा। वही सेंटेंस उसने यहाँ यूज किया हुआ है। वन ऑफ द कॉमन रीजन where people join group because of the work hard each other. Informal groups seem so the among those who are not close proximity. वो close proximity यानी similar work के लिए नहीं होते, just hi hello के लिए होते हैं। When people have the frequent interaction or contact with one another, there are the likelihood that they will be form of groups. Finally, it behavior of one individual influence that other the likely form a group. Then security, probably probably the stronger reason joining that the group in the needs to security. Okay, by joining a group we can reduce the insecurity, we feel the stronger. एकापेक्षा दोन किंवा एक से दो भले, क्यों बोला जाता है? बिकॉज द ग्रुप ऍक्टिव्हिटीज आहे, आणि जेव्हा एक ग्रुपचा बल असतो हा एकट्यापेक्षा मोठा असतो आणि तो काहीतरी मोठा करू शकतोय, या थिंकने आपण ग्रुप ऍक्टिव्हिटीची स्टडी करतो. ओके, then we derive the resources from the integrate with the other and being part of group. This is the often explanation with apparel union. If management create an environment with the employees for insecure, they likely turn unionization in order to reduce their feeling insecurity. इन शॉर्ट जब मैंने ये स्टार्ट किया था, इससे पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया कि हर जगह ग्रुप होते हैं, ग्रुप एक्टिविटी आर दर। जब ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप होता है और उसका हेड उस ग्रुप को कभी भी यूनिटी में लाने की कोशिश नहीं करता। या देन सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी के पॉइंट में उसने क्या एक्सप्लेन किया, वही जो मैंने अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर। सिक्योरिटी इज डिपेंडिंग ऑन कि टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी रहती है। हेड को ये सिक्योरिटी रहती है कि मेरे अंडर जो काम कर रहे हैं उनमें अगर यूनिटी हो गई तो वो मेरे खिलाफ कोई एक्शनल वर्क कर सकते हैं, एंड दिस इज इफेक्टिंग ऑन मी एंड माय प्लेस ऑफ वर्क, और मेरी जगह जा सकती है, मेरी जगह कुछ भी हो सकता है। एंड सेकंड इज कि जो जूनियर होते हैं वो यूनियन जनरेट करते कि अगर अगर हम यूनिटी में नहीं रहे, हमने अगर यूनिटी में वर्क नहीं किया तो हमारे खिलाफ ये जो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप जनरेट होगा कि हमारा हेड है वो हमें झगड़े लगाएगा, मेरे बारे में मेरे कलीग्स को कुछ बोलेगा, मेरे कलीग्स के बारे में मुझे कुछ बोलेगा, और हम दोनों में झगड़े लगाएगा। और उससे बचने के लिए हम यूनिटी एक जनरेट करते हैं। दिस यूनिटी इज ऑल्सो अ ग्रुप, उसके बारे में बोला हुआ है। जब देखो उसने बोला हुआ है प्रोबेबली
The strong reason is joining a group, it is need to security. हम किससे बचते हैं? सिक्योर, खुद को सिक्योर करने के लिए. By joining a group, we can be reduced our insecurity with feeling the strong new the expensive experience. No employee like the strong law. We drive the resource we derive the resources from the interaction with other being part of group. This often explains the power of union. If management create an environment in which employees feel insecure, अगर एम्प्लॉयज कोई भी तुम्हारे अंडर जो काम कर रहे हैं, जैसे हमारा एक ग्रुप है कॉलेज ग्रुप, अगर हमें ऐसा लगा कि स्टाफ को कि वी आर अनसिक्योर फ्रॉम माय हेड, लाइक हमारे अपने जो हेड है मोस्टली सर एंड ऑल, वी आर फील द वी आर मेक वन ग्रुप, वी आर मेक द वन ग्रुप. कौन सा ग्रुप बनेगा? अनसिक्योरेसी के लिए जो स्टाफ अनसिक्योर है उनका अलग ग्रुप बनेगा, जो सिक्योर फील करते हैं उनका अलग ग्रुप बनेगा. ये एक एम्प्लॉयमेंटशिप जनरेट होती है. एंड दिस and that they are likely to turn to unionization in order to reduce their feeling in insecurity. किसके लिए बनता है? कि फीलिंग शेयर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए कि हमारे साथ ऐसा बिहेव हो रहा है, हमारे साथ ऐसे बिहेव हो रहा है, ऑन दिस बिहेवियर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. एंड दिस इज द फर्स्ट मूवमेंट टू रिड्यूस योर एचओडी. और वो मूवमेंट किसके लिए होता है? कि हाँ वहां पे हम यूनियन जनरेट करते हैं, एम्प्लॉय यूनियन में जनरेटशिप आर जनरेटेड, और वो फिर स्ट्राइक्स एंड ऑल जनरेट होके वर्क आर डन देयर. देन स्टीम. The steam, an individual can be increased his self-esteem through the group membership. One may begin the steam becoming the member of higher status group associate with the higher status people. स्ट्रीम में क्या दिखाया हुआ है? उसने सिंपल स्ट्रीम दिखाया हुआ है कि तुम किस स्ट्रीम से आते हो, किस ग्रुप को सिलेक्ट कर दो, उससे तुम्हारी स्ट्रीम सिलेक्ट होगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ उसने साइकोलॉजी की इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है कि तुम स्टूडेंट हो तो सिर्फ तुम्हारी स्ट्रीम स्टूडेंट तक नहीं होती है. एज पर नॉलेज तुम्हें जो बंदा चाहिए तुम उससे उसकी स्ट्रीम जनरेट कर सकते हो, उसके बिहेवियर या लाइक बिहेवियर के हिसाब से तुम बिहेव करो एंड उससे अपनी ग्रुप एक्टिविटी में ले लो. फॉर एग्जाम्पल सिंपल लास्ट ईयर भोसले सर ने काम किया था ये, वी आर द जनरेटिंग द स्टूडेंट एंड स्टाफ ग्रुप जो टेक्नो इवेंट में यूज हुआ था. तो उसके अंदर जो बॉन्डिंग ऑफ द स्टाफ एंड स्टूडेंट आर बेस्ट बिकॉज टीम इज देयर. बच्चों की उनकी जो नॉलेज एक्टिविटी एंड द स्टाफ की नॉलेज एक्टिविटी को मर्ज करके उसको बनाया गया था. एंड द मर्जिंग आर बेस्ट एंड द एक्टिविटी आर बेस्ट. Okay. Then the power. The member of guru power are the member of leads two way. The first that is the same the such united we stand to die, divided we fall. देखो सिंपल बोला हुआ है, यूनिटी में रहेंगे तो सब खड़े रहेंगे, अगर उनको किसी ने अलग किया तो वो टूट के बिखर जाते हैं. एंड मैंने वही बताया कि ग्रुप एक्टिविटी में वही होता है कि अगर एम्प्लॉय ग्रुप हो गया तो एचओडी उसको तोड़ने की कोशिश करता है. There is the strength in member. Secondly, leadership inform group. The NFL inform the power as group member, even if do not enjoy a formal position, although the organizational work. Then the stages of development. Stages of development. क्या development? Group development. Group development group goes to the five distinct stage, forming the storming, gnawing, performing, and adjoining. Okay, then it is the forming. Forming, it is a characteristic by the great deal uncertainty about groups proper purpose of structure and leadership during the stages of members get acquainted with one another. They are 10B uncertainty in action. पहला क्या ग्रुप है? फॉर्मिंग ग्रुप है. इसमें क्या किया जाता है? ग्रुप फॉर्म किया जाता है. अब ग्रुप फॉर्म करेगा जो ग्रुप का हेड होता है. अब जो ग्रुप का हेड होता है उसकी टेंडेंसी, उसकी सर्टेंसी, उसके ड्यूरिंग ऑफ स्टेज क्या होंगे, उसके हिसाब से अपने ग्रुप में कौन होना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी क्या होनी. दिस आर द फॉर्मिंग इज दैट. ओके. दैट द सेकंड स्टेज इज स्ट्रमिंग. स्ट्रमिंग में क्या होता है? दिस स्टेज द कैरेक्टरिस्टिक्स द इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट.
अब इसमें इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट यानी दो अलग ग्रुप एक जगह मर्ज हो रहे तो उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उनकी थिंकिंग पावर, अपनी थिंकिंग पावर, उनका थिंकिंग बिहेवियर, अपना थिंकिंग बिहेवियर, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को परफेक्ट किया जाता है. मेंबर आफ्टर द रेस्टिंग द कंट्रोल बाय ग्रुप लीडर्स. अब ये कैसे होगा, तो ग्रुप लीडर्स की स्टडी की जाती है कि उस ग्रुप लीडर की बिहेवियर क्या है, इस ग्रुप लीडर की बिहेवियर क्या है, अदर ग्रुप लीडर्स की क्या है. बिकॉज द ग्रुप्स आर वन कैरेक्टरिस्टिक, तो लीडर का कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वही ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक होगा, इसलिए वो सिर्फ लीडर को स्टडी करते हैं. Then the second is next is norming. Norming, this stage the characterized by close relationship and चूजीनेस. हम जो सिलेक्ट करते हैं उससे कैरेक्टराइज किया जाता है अपने ग्रुप को, कि हम जिसको सिलेक्ट करते हैं जैसा हो उसका वैसा दोस्त, दोनों का बिहेवियर सेम. देर आर द स्टेजेस आर सेंसिटिव टू ग्रुप आइडेंटिफाई. और ये क्या होती है, कौन सी स्टेज होती है ग्रुप को आइडेंटिफाई करने की, तो सिंपल सेंसिटिव स्टेज. ओके, अ फीलिंग, a feeling of terms, spelling the spaces between the member, believing that they are not found there the proper role. The group choosenness is the main feature of the stage. Okay, the performing the structure at the point of full function and accepting the groups devotes the energy to getting the work done. Hmm? परफॉर्म में क्या बताया हुआ है, अब उनकी एनर्जी और वर्क डन को परफॉर्म किया जाता है बाय दिस ग्रुप एक्टिविटी. ओके, एंड दिस एक्टिविटी कंडक्टिंग बाय द सेम कैरेक्टरिस्टिक. वो किसकी वजह से हो रहा है, सेम कैरेक्टरिस्टिक के, सब क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेम होते हैं. फॉर एग्जांपल बीएमएस स्टाफ ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टीच यू. उनका एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, टीच यू. इस वजह से वो सब एक जगह हुए ताकि तुम्हें अच्छे से सिखा सके. ऑन बेसिस ऑफ बीएमएस क्यों लिखा हुआ है, बीएमएस के बारे में सिखा सके, मैनेजमेंट के बारे में लिखा सके. तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, टू नो द मैनेजमेंट, नो द टू नो द मैनेजमेंट, टू नो द टीचिंग स्टाफ, टू नो द टीचिंग एक्टिविटी. ये कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम सब एक है वहां में. Okay, then adjourning the form of performing work group performing at the list of stages in there the development. However, the temporary committee, task force, and similar group that have been the limited task performed, there is an adjourning stage. In this stage, the group prepare for its disbandment. High task performing not longer group top priority. Instead, the attendance attention is direction towards the wrapping up activities. किसके ऊपर होती है wrapping up से ने, वो क्या कर रहे हैं, एडजॉर्निंग हो रही है. एडजॉर्निंग के ऊपर जो एडजस्टमेंट हो रही है कि लोअर एंड हायर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहा है उस कॉन्फ्लिक्ट्स को जनरेट करते हैं, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं. ओके, देन द वर्क ग्रुप बिहेवियर. द वर्क ग्रुप बिहेवियर यानी ग्रुप बिहेवियर का काम. द वर्क ग्रुप आर द नॉट are organized modes. They are having the behavior modes towards to be the able to the understanding this model or the needs to understand that the work are substantially enables. In large systems or the organization work groups as not existing in isolation, they are part of large organization. For example, production unit, Hindustan Unit, Hindustan Unilever Limited may be the fair situation for the headquarters, but in the live within the rule regulation policy director from the headquarters. So every work group influenced by conditions inflow on it. This is the condition where the flow. The some concept we can be understood. The factor of affecting the group behavior determine the group behavior. इन शॉर्ट क्या बताने जा रहा है कि ग्रुप के बिहेवियर की वजह से जो हमें होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम आज स्टडी करेंगे. अब कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे कि ग्रुप में किसी को कुछ नॉनसेंस स्मोकिंग वगैरह का एक को होता है, एक की वजह से सबको आदत लगती है स्मोकिंग ड्रंकिंग. इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट, यानी एक बैड बिहेवियर और बैड बिहेवियर का कारण बनता है. बोलते ना, एक गंदा प्याज पूरे प्याज के टुकड़े को खराब करता है, इसी तरह होता है. इट्स अ ग्रुप एग्जांपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. एंड अंडरस्टैंड दैट द वर्क ग्रुप्स एंड दिस सबस्टीम्स द एम्बैलेंसिंग लार्जिंग सिस्टम, और जिसकी वजह से एम्बेड हो रहा है, एम्बैलेंसिंग हो रहा है, और उसको हम स्टडी करते हैं एंड रिकवर इट. ओके, अब उनकी जो मेन क्लॉजेस है, कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट अंडरस्टूड करना है. द फैक्टर एक्सटर्नल इंटरनल अफेक्टिंग ऑन द वर्क ग्रुप बिहेवियर.
The first is overall stage, overall stages of organization. इसके अंदर क्या बोला हुआ है, the overall stage strategy and the goals are always are decided by the top management. किसने करना चाहिए, top management of the work group, which is turn determine the resources that the organization of top management is willing to allocate it than the performing this task. So due to the recessions in the market and downfall of the product of organization, the company decide to withdraw the product from the market, but sometime inside that the employees from that the particular department will place in other department. देखो एक शॉर्ट एग्जांपल बताता हूँ जो यहीं पे बताया हुआ है। एक सेलफोन आता है तो सेलफोन की जो एक फीचर्स आता है वो फीचर्स को बनाने का एक ग्रुप होता है। अगर वो सेलफोन किसी कंपनी ने बता दिया कि फ्रॉम नेक्स्ट मंथ दिस मोबाइल्स आर क्लोज फ्रॉम मोबाइल फोन आर क्लोज फ्रॉम द मार्केट, तो वो ग्रुप रहेगा नहीं रहेगा, तो एम्प्लॉय के ऊपर इफेक्ट होता है। और क्या इफेक्ट होता है कि उस एम्प्लॉय को फिर अदर डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है। अगर अदर डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाएगा तो यहाँ जो ग्रुप बॉन्डिंग हुई थी वो अदर डिपार्टमेंट में वन डे में होगी, वन वीक में होगी, वन मंथ में होगी, नहीं होंगी। इट इज इफेक्टेड ऑन योर वर्क, इट इज इफेक्टेड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट इजी एंड नॉट गुड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। देन अथॉरिटी टू स्ट्रक्चर, अब इस ग्रुप को स्ट्रक्चर करने की अथॉरिटी किसके पास दी जाए। All organizations have to authority struck that the different hierarchy classify position of each employee group. Okay, mentor to how report who, खुद को कैसे report करे, who make the decision and what decision individual who group are employed to make. This structure typically determine where the given work group is placed in the organization hierarchy, the formal leads on the group and relationship between group. देखो यहाँ उसने क्या बोला हुआ है कि अथॉरिटी दी, खुद को अथॉरिटी दो कि तुम्हें कैसे बिहेव करना है, कितने लिमिट तक करना है और किससे करना है। इससे क्या होने वाला है कि तुम्हें अगर उस डिपार्टमेंट से अलग किया गया या दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया तो वो जो स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक है कि तुम्हें किससे कितना बोलना है, क्यों बोलना है, क्या करना है और कब करना है, इसकी पॉलिसी तुम हर जगह यूज कर सकते हो और इजीली एनीवन ग्रुप में तुम टाइप हो सकते हो, टाइप हो सकते हो। दिस टाइप के लिए दे होना जरूरी है। उसने बोला so while a group might be the lead someone who emerges employing the will within the group, the following distinct leads by the authority to let other in the group do not have, जो कि अथॉरिटी तुम्हें ग्रुप नहीं देने वाली है लेकिन तुम्हें खुद से वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ओके, देन फॉर्मल रेगुलेशंस, खुद के फॉर्मल रेगुलेशंस होनी चाहिए जिसको तुम्हें फॉलो करना है। Every organization has the set of rules, procedure, policy, job description, etc. McDonald's has standard operation procedure for the taking order, cooking hamburgers, and the making French fries. The discretion of work group member to cite independent stand of the behavior of survival limit. अब उसने पहले ही बोला हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन के सब ग्रुप्स रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करो हर जगह किसी भी डिपार्टमेंट में, इसी से योर बिहेवियर आर बेस्ट एंड बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसने मैकडोनल्ड्स का दिया कि मैकडोनल्ड्स की कितनी तो ब्रांच है लेकिन सब जगह सब बातें सेम होती है। जैसे सम पार्ट्स ऑफ कुकिंग में हैमबर्गर्स कौन बनाएगा, फ्रेंच फ्राइज कौन बनाएगा, बर्गर की क्या कुकीज कौन बनाएगा, बन कौन ब्रेकअप्स करेगा, ये डिसाइड होता है। अगर तुम्हें शिफ्ट किया गया और वही अगर तुम्हारी एक्टिविटी वही है तो तुम्हें वहां पे भी वही काम दिया जाएगा। ओके, देन रिसोर्सेस, कौन कौन से रिसोर्सेस इफेक्टेड ऑन योर वर्क। Some organizations are large and profitable within the abundance of resources. There, the employees will have the modern, high quality tools and equipment to their job. Other, the organization aren't the forfeiture where the organization have the limited resources so that their work groups and what are the group actually accomplishes. देखो यार सिंपल उसने बात बोला हुआ है कि रिसोर्सेस जो तुम्हें काम करने के लिए मिलने वाली है ये भी एम्प्लॉय वर्क पे इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल
सम जगह पे कंप्यूटर्स या इलेक्ट्रॉनिक को कम यूज किया जाता है, तो वहाँ बड़े ग्रुप रहेंगे. एज एज टू आईओटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, आईटी को जो ज़्यादा एक्सेप्ट करता है वह वर्कलोड कम होता है. मॉडर्न बैंक्स एंड बिफोर बैंक्स की स्टडी करेंगे तो टुडेज बैंक्स में जो वर्क करने वाले पब्लिक है, द लिमिट ऑफ एम्प्लॉयज आर लेस एज कम्पेयर टू द बिफोर. जब तुम बचपन बहुत छोटे थे, बहुत यानी एकदम बहुत, यू आर इन फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड, उस वक्त अगर बैंक में कभी पेरेंट्स के साथ विजिट किए होंगे तो कितनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे आर, जितने लोग आते थे उससे ज़्यादा वो बैंक में काम करने वाले दिखते थे. बिकॉज द IT sector are less that time. Today IT sector is high, और IT सेक्टर हाई हुआ है तो वो वर्क भी वैसा ही कर रहा है. उस वजह से वो एक कंप्यूटर या IT सेक्टर 5 लोगों का काम कर रहा है, तो हम 1:5 के रेशो में डाइवर्ट हो रहे हैं. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस इवेल्यूशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम. अब इसमें क्या होता है, ग्रुप को कैसे करना चाहिए, परफॉर्मर इवेल्यूशन और रिवॉर्ड देना चाहिए. उनकी गलतियों को काउंट करके उनको बार बार टॉर्चर नहीं करना चाहिए. Another, the organization variability that they affect all employees is a perform evaluation and reward system. What is the design organization reward system while the achieving the objective? Since work group are part of the large organization system group member, behavior will influence by how the organization. Hello. Okay. Then the next is the performing evaluation. Then the organizational culture. Organizational culture is a consists the creation the standard, certain and creating the standards of the accepting of the accepting of the unacceptable behavior after the few months. Employee the come to the know they are the organization culture, they are the. देखो इस पॉइंट पे मैं इतना एक्सप्लेन करना चाहूंगा. यहाँ उसने बोला हुआ है द एक्सेप्टेबल द अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर. कौन सा अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है जो ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, कि देखो सबसे बड़ा 2 ग्रुप बनते हैं, एक विलेजेस और नॉन विलेजेस. तो ये ग्रुप नहीं बनना चाहिए जिसको अभी उसने एक्सेप्ट किया इस बात को. अगर तुम कितना भी यहाँ मास्टरेट करो, वेल इंग्लिश स्पीकिंग एंड स्पोकन रहो, इफ यू आर विजिटेड इन विलेज एरिया तो तुम्हें ज्यादा वेटेज दिया जाता है एज कम्पेयर टू यू आर विजिटेड इन मेट्रो सिटी. तो पहले ही तुमसे कोई किसी ग्रुप में ऐड नहीं करेगा जब तक कि उनको एक्सेप्ट नहीं हो कि ही अल्सो या शी अल्सो बिहेव लाइक अस, ये भी हमारी तरह है, तब तक वो तुम्हें विलेजर्स काउंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल तुम्हें वो एडवर्टाइज आई होंगी, वो पिज्जा की, उसको पिज्जा का कैलकुलेट करता है, पिज्जा को पिज्जा, यू आर ईटिंग पिज्जा, कोई तो एक एडवर्टाइज है, तो उसको वैसे बिहेव किया जाता है कि यू आर अ विलेजर्स, यू नॉट स्पीकिंग स्पोकन इन इंग्लिश वेल, यू नॉट स्पीकिंग इट्स नॉट पिज्जा इट्स पिज्जा, ऐसे उसको बिहेव किया जाता है. ये बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल में इफेक्ट करता है, इसलिए उसको आज से लिया गया है. फाइंड आउट द व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर विल बी एडमायर. किसको एडमायर किया जा रहा है, किसको पॉइंट किया जा रहा है, वो फाइंड आउट किया जाता है. They know the thing like how to dress for work, whatever or not rules are regularly enforced. उसके लिए अभी हम लोगों ने ड्रेसिंग बिहेवियर एंड ऑल के ऊपर डिस्कस किया हुआ है, क्या ड्रेस करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने डिस्कस किया हुआ है एंड दे आर डन देयर. एंड द लास्ट पॉइंट इज फिजिकल वर्क सेटिंग. Physical work setting is including the size of placement, employee workplace, arrangement and equipment, illustration level and etc. They are the work settle in create opportunity for the behavior interaction among the work group members. Say if the opportunity for the behavior interaction among the group, say that the supervisor in sittings bank cabin in the workers under himself open spacing and partnerships. Okay,
फर्दर द फॉरिंग हिम, इसमें क्या होता है, तो फिजिकल वर्क सेटिंग किया जाता है कि जितना हार्ड वर्क है वो किसको सेट किया जाए, किसके लेवल किया जाता है, इंक्लूडिंग द साइज ऑफ प्लेसमेंट, किस किस को प्लेस किया कौन से लेवल पे, उस लेवल के हिसाब से किया जाता है। फॉर एग्जांपल एचओडी के अंडर, देन एचओडी के अंडर जो काम करने वाले उनके अंडर कितना एचओडी को डिसाइड होता है कि वो कितना काम किसको बांटे, एंड देन द डिवाइडेड वर्क इज बेस्ड देन वो किससे कितना करवा के लेता है उसके अंडर वाला, ये लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड किया जाता है। ओके, टुडे वी आर स्टडी the 4 point of your group behavior. From next lecture we study the group member resources. Okay, all of you, thank you.